हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विश्वजीत और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू शिकागो। दिस इज द फर्स्ट टाइम that me and my brother Bijit are visiting Chicago, and right now we are heading towards an Indian restaurant. We had an early morning flight and we did not get a chance to have breakfast and lunch, and right now we are craving for Indian food, and therefore we are now heading towards an Indian restaurant in Chicago. There are a lot of restaurants nearby our hotel, stay Pineapple Inn, but the Indian House restaurant is the nearest one, which is like 15 minutes of walk from our hotel. And this will also give us an opportunity to explore the humongous and beautiful city of Chicago. Weather today is not that welcoming. The winds are strong and it's really cold out here. The temperature right now is 20 degrees Celsius, but it feels like 4 to 5 degrees Celsius because of the strong winds. Now I know why Chicago is called the Windy City. If I compare Chicago with New York, I feel that New York is much more cluttered, a bit more congested, same like Mumbai. Although Mumbai is way too congested, but Chicago, in comparison with New York, has much more wider roads and open spaces, which makes the city more breathable. In terms of safety, I'm not sure how safe Chicago is when compared to New York. This is my day one in Chicago. It would be way too early to comment on that part. And now, as we are moving towards the Indian House restaurant, we encountered this beautiful riverfront of Chicago River right in the heart of the city. This is so incredibly beautiful. Imagine yourself having such a place to relax and unwind after completing your work. On my left, there is this huge building which has 15 floors of parking. Looks like a residential building to me. But anyways, I'm just envious of people residing or having offices right in front of this beautiful riverfront in Chicago. Such a beautiful view. Even if I spend 30 minutes on this bridge, it won't be enough. We are now hungry and we need to reach the restaurant before it closes. So now let's head towards the Indian House restaurant and check out what they have to offer. So guys, अभी हम हैं द इंडियन हाउस रेस्टोरेंट में. We have ordered samosas and आलू पराठा. The ambience is quite Indian. हिंदी गाने बज रहे हैं. तो गाइस अभी द इंडियन हाउस रेस्टोरेंट में मैं हिंदी गाना गुनगुना रहा हूँ. अजीब है दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म यार. शिकागो में आकर, इंडियन रेस्टोरेंट में आकर लता मंगेशकर जी का गाना सुनना यार दिल भर गया है मेरा. तो गाइस हमारा खाना आ चुका है. दिस इज समोसा. वी हैव 4 समोसास, 2 plates of आलू पराठा with some chutney. So let's have the lunch and I will see you in some time. So guys, ये जो बिल्डिंग है उसके बारे में बात कर रहा था. आई थिंक 15 फ्लोर्स की सिर्फ पार्किंग है यहाँ पे. और बिल्डिंग के नीचे ही यार बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है. मैं आपको वापस उसी जगह से लेकर जा रहा हूँ बिकॉज दैट्स द वे बैक होम. I was just blown away by the side of it. ऐसा लगता है कि यार कहीं लाइक यूरोपियन कंट्री में है. लाइक नॉट लुकिंग एट द बिल्डिंग्स बट जो वाटर बॉडी है उसको देखते. सो गाइस, दिस ब्रिज इज़ अंडर मेंटेनेंस. काफ़ी पुराना सा ब्रिज है और कहीं कहीं छेद भी है इस ब्रिज पे. तो व्हाट दे हैव डन,
कि जैसे कवर कर दिया, जहाँ पे भी होल्स वगैरह है उसको वुड से कवर कर दिया। तो काफ़ी रिस्की है ये ब्रिज से जाना। लेट मी शो यू। जैसे आप नीचे देख रहे हो, ये लोग ने ऐसे कवर करके रखा है, और उसके आप पैर रखोगे तो दब जाता है। राइट नाउ इज ड्रिजलिंग एंड द व्यू इज स्पेक्टेकुलर। लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। तो बुढ़े अभी तीनों को। हाँ हम तो ऐसे ये लोग कायाकिंग पण कर रहे हैं। है ना काफ़ी खूबसूरत। लोग यहाँ पे बोटिंग वगैरह कायाकिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। और इस ठंडी भी बज रही ठंड, और वैसे भी ठंडी बढ़ रही है, और क्योंकि अभी ड्रिजल भी हो रहा है तो जल्दी से लौटने चले जाते हैं, वरना ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। और हमारे पास सिर्फ 6 दिन है, अगर बीमार पड़ गए तो 6 दिन चले जाएंगे। So later in the evening, we visited one of Chicago's most popular tourist attraction, the Millennium Park. And right now, we are heading towards the beautiful Millennium Monument, very style, at the Wrigley Square. This is how this monument used to look in the year 1926. Chicago has always had harsh weather conditions. The original was made of concrete, which did not stand up to the harsh weather conditions, and therefore a new monument, which we see today, was constructed in the Millennium Park at the Wrigley Square. Today, Millennium Park is the second most visited tourist place in Chicago after Navy Pier. And in this Millennium Park, there's a public sculpture which is made by an Indian-born British artist, Mr. Anish Kapoor. So let's go and see it. I'll do a selfie That's why that's also. You're doing it wrong, Dan. Yeah, that's Snapple. Snapple. Look, right now we are inside the Millennium Park, and this beautiful structure is called as the Cloud Gate. It is also called as the Wheel.
सो बेसिकली ये इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश स्ट्रक्चर ने बनाया अनिश कपूर ने। जब तक ये स्ट्रक्चर बन गया था इसका नाम क्लाउड गेट था, बट यहाँ के लोकल्स ने इसके स्ट्रक्चर को देखकर इसको बिम कहा था। इसकी खासियत है कि आपको पूरी की पूरी स्काईलाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अभी कम फॉरवर्ड लेट मी शो यू समथिंग। तो गाइस इसका जो एक्सटीरियर है ये स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। अराउंड 186 स्टेनलेस स्टील प्लेट्स यूज़ किए गए और ये कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी से इसको कट किया गया। इंटीरियर इसका मेटल रिंग से बनाया गया, सिर्फ 2 मेटल रिंग्स यूज़ किए। जो आप ब्रिजेस पे देखते हो वही उसी मेथड या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अंदर से इसको सपोर्ट दिया गया। और गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ वगैरह यहाँ पे लगा के रखे हैं। तो अभी देखिए कम ओवर एंड शोल्डर यहाँ पे आपको सबके फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रक्चर को देखो तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको सपोर्ट कैसे दिया है। जिसकी हेल्प से इसको सपोर्ट दिया गया है, फिर कट किया गया इन 2 पीसेस। तो गाइस अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट में आ गए। रेस्टोरेंट का नाम है द इंडियन गार्डन रेस्टोरेंट और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे। काफ़ी सारे इंडियन लोग हैं, लॉट ऑफ महाराष्ट्रियन, गुजराती ओवर हियर। सो वी हैव ऑर्डर फूड, वी हैव ऑर्डर्ड कश्मीरी आलू एंड 1 नान। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री राइस भी है। सो लेट्स सी हाउ द फूड इज़। सुबह हम गए थे इंडियन हाउस रेस्टोरेंट में, अभी है इंडियन ग्रीन रेस्टोरेंट में। द एम्बियंस इज़ वेरी नाइस। सो गाइस ये जो रेस्टोरेंट है ये आई थिंक 20 मिनट्स वॉक पे फ्रॉम द मिलेनियम पार्क। यहाँ से वो इंडियन हाउस रेस्टोरेंट भी 20 मिनट्स वॉक पे। तो ये हैव 2 ऑप्शंस नियर द मिलेनियम पार्क अगर आपको इंडियन फूड खाना है तो।
गाइस हमारा खाना आ चुका है. लुक्स डिलीशियस. लेट्स ट्राई इट नाउ. Yes. That's spicy. इट्स गुड. थोड़ा स्पाइसी है. मैंने मीडियम स्पाइसी ऑर्डर किया था बट थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी आ गया. नो वरीज, वी आर गुड टू गो. आई थिंक आज पेट भर के डिनर होगा.